हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सोल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी, जिसका टॉपिक कमर्शियल मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम इसकी थर्ड यूनिट शेयर एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज 3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन वहाँ मिल जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं शेयर एंड डिविडेंड्स के, वो भी हमने इसकी फर्स्ट वीडियो में शेयर कर दिया है। तो प्लीज़ आप वहाँ से इसके फॉर्मूले प्लस इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अ मैन बॉट 1100 रुपीज शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कैरिंग 8% डिविडेंड कोटेड एट रुपीज 130. A few days later, the market value of the shares went up by 10%. He sold all his shares. What was his income from his transaction? So इस ट्रांजैक्शन को उसको कितनी इनकम हुई है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी फेस वैल्यू देख लेते हैं, दैट इज़ 100 रुपीज शेयर है तो इसकी फेस वैल्यू भी 100 ही रहेगी। सो विल राइट हियर फेस वैल्यू ऑफ each share is rupees 100. Number of shares, it is 1000, and rate of dividend is 8%. जब इसकी मार्केट वैल्यू of each share is rupees 130. Okay, so for 1000 shares के लिए इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? Therefore, market value of 1000 share will be rupees 130 multiplied by 1000. We'll get here 13000. So it is 1,30,000. Next, after some time, market value of the share went up to 10%. मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू थी उसमें 10% इंक्रीमेंट हुआ है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी 130 में हम 10% और ऐड कर देंगे। सो इट विल बी, फेस वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है हमेशा। सो 130 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, ये ज़ीरोस कैंसिल हो गए। विल गेट हियर रुपीज़ 143. देयरफॉर sales price of 1000 share will be rupees 143 multiplied by 1000. We'll get here 1,43,000. अब आपको बताना है उसने इनकम कितनी की इतने ट्रांजैक्शन पे। What was his income? So we'll write here income from this transaction will be rupees 143,000 minus 130 and 000. So we'll get here as rupees 13,000 as the answer. Next, question number 7a. Mr. Roy buys 510 rupees shares of a company at rupees 5 each from the stock market. The company pays 14% dividend annually. Find the investment of Mr. Roy in share. Second, his annual income from share. And third, rate of return from the share. तो सबसे पहले हम given लिख लेते हैं।
face value of each share is rupees 10. Number of shares are 500. Next is market value of each share is rupees 15 and rate of dividend is 14%. This is the rate of dividend. So we need to find the total investment. So total investment, इसका फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ. नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by the market value of one share. Number of shares है 500 multiplied by the market value, that is 15. So we'll get here 7,500. This is the first part. Second is the annual income. So annual income is equal to number of shares multiplied by rate of dividend multiplied by the face value divided by 100. So number of shares are here 500 multiplied by the rate of dividend, that is 14, and face value is rupees 10 divided by 100. So we'll get here rupees 700. Next is rate of return. So rate of return, इसका फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं. दैट इज़ दी एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय दी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. सो एनुअल इनकम हमने कैलकुलेट की है 700. इन्वेस्टमेंट इज 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो वील गेट हियर 28/3%, or we can write it as 91/3% as the answer. Next part is a man buys 350 rupee shares of a company at a premium of 20% from the market. The company pays 12% dividend annually. Find first the investment made by man, second his annual income from the share, third rate of return from the shares. तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं. Face value of each share is 100 rupees and we know the number of shares are 350 and the rate of dividend is 12%. अब हमको मार्केट वैल्यू निकालनी है. मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी द इंक्रीमेंट इन द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू में हमको इंक्रीमेंट करना है 20% का. सो ₹100 प्लस 20% ऑफ 100 विल बी ₹20. सो इन ऑल वील हैव 120 एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ. इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स आर 350 मल्टीप्लाइड बाय ₹120. we'll get here ₹42,000. Next is the annual income. इसके लिए भी फॉर्मूला number of shares multiplied by the rate multiplied by the face value divided by 100. Number of shares are 350. Rate is 12%. Face value is 100 and again divided by 100. So we'll get here ₹4,200 as the annual income. Next we need to find the rate of return. So rate of रिटर्न फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ. एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय द
investment multiplied by 100. So substituting the values, so annual income is 4200 divided by 42000 multiplied by 100. So we'll get here as 10%. So this is the solution. Next question number 8. Mr. Chaudhary invests rupees 20,800 in 6%, rupees 100 share at rupees 104 and 14,300 in 10.5% rupees 100 shares at rupees 143. What will be his annual income from the share? So इस टाइप के स्टेटमेंट कैसे हम जॉट डाउन करते हैं इससे गिवन, ये मैं प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. I'll divide this question into two cases. This is the first and this be second case. So for case 1, हमको investment पता है, that is rupees 20,800. Rate of dividend पता है 6%. Face value of share पता है, that is rupees 100, and we know the market value of each share, that is rupees 104. तो अब हम इससे एनुअल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. एनुअल इनकम विल बी, जो आपका इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाइड बाय द रेट मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू. हम यहाँ पर सीधे सीधे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को हम इन्वेस्टमेंट अपॉन दी मार्केट वैल्यू लिख सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स n को हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉन दी मार्केट वैल्यू. सो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा इन्वेस्टमेंट multiplied by R multiplied by the face value divided by market value multiplied by 100. So investment is rupees 20,800, R is 6, face value is 100, market value is 104 multiplied by 100. So on solving this, we'll get this as rupees 1200. Next is for case 2. हमको इसका इन्वेस्टमेंट गिवन है, दैट इज रुपीज 14,300. रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है 10.5%. फेस वैल्यू इज गिवन रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू इज गिवन रुपीज 143 फॉर ईच शेयर. सो अभी हमने फॉर्मूला देखा था एनुअल इनकम का, दैट annual income will be equal to investment into the rate of dividend into face value divided by the market value and 100. So इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 14,300 multiplied by 10.5 multiplied by 100 divided by 143 multiplied by 100 in the denominator, and on solving this we'll get this as rupees 1050. So total income from both the cases will be rupees 1200 plus rupees 1050. So in all we'll get 2250 as the answer. Next question number 9, first part. A company declares a semi-annual dividend of 8%. So यहाँ पर आप याद रखेंगे it is semi-annual, not the annual. Semi-annual मतलब half dividend है 8%. A man has 600 shares, each of face value rupees 50. Find the annual income from the share. So इस केस में rate of dividend is 8% for semi-annual. So half yearly है, और अगर हम इसको yearly करेंगे तो ये डबल हो जाएगा. So rate of dividend is 8% for semi-annual. Therefore, annual rate of dividend will be 2 into
8%, that is 16%. And we know the number of shares are 600. Face value of each share is rupees 50. So now annual income will be N into R into face value divided by 100. N is 600, R is 16, face value is 50 divided by 100. And on solving this, we'll get as rupees 4800. Second part, a man has 300 share of rupees 100 available in the market at the price of rupees 120. The company declares a semi-annual dividend 5%. Find its annual income. तो सबसे पहले हमको number of shares given है 300. Face value of each share is rupees 100. Market value of each share is rupees 120, and rate of dividend is 5% for semi-annual. Therefore, annual rate of dividend will be 2 into 5%, that is 10%. So therefore the annual income will be number of shares 300 multiplied by the rate of dividend, that is 10, multiplied by the face value, that is 100, divided by 100. So we'll get here rupees 3000 as the answer. Next, question number 10. A company declares a semi-annual dividend of 6%. A man has some shares of a company. Nominal value of each share is being rupees 100. If his annual income from the share is rupees 1800, find the number of shares held by him. तो number of shares आपको calculate करना है. तो rate of dividend is 6% for semi-annual. Therefore, annual rate of dividend is 2 into 6%, that is 12%. अब हमको face value given है. Face value of each is rupees 100. Nominal value को ही हम face value बोलते हैं. And we know the annual income. Annual income is rupees 1800. So number of shares will be equal to, according to this formula, हम इसको थोड़ा सा modify कर देंगे. Annual income multiplied by 100 divided by R multiplied by the face value. So annual income is 1800 multiplied by 100 divided by rate, that is 12, divided by face value 100. So we'll get here 150 as the answer. Next, question number 11. A company declares a semi-annual dividend of 5%. A man has 400 number of shares of company. If his annual income from the share is rupees 1000, find the face value of each. तो यहाँ पर हमको semi-annual rate of dividend given है 5%. So rate of dividend is 5%, that is semi-annual. So now we'll calculate annual rate of dividend is equal to 2 into 5%, that is 10%. We are given number of shares. So number of shares are 400.
and annual income is rupees 1000. Now we need to calculate the total face value. Therefore, total face value will be, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर देंगे. एनुअल इनकम इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय, हम टोटल की जगह सिंपल एक शेयर की फेस वैल्यू निकाल दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर से भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 400 एंड डिवाइडेड बाय द रेट दैट इज़ 10. सो तीनों ज़ीरो ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो डिवाइडिंग दिस बाय, सो इट इज़ 25 rupees the face value of each share. Next topic is on miscellaneous problem. Question number 12. A dividend of 9% was declared on rupees 100 share selling at a certain price in the stock market. If the rate of return is 7.5%, calculate the market price of each amount to be invested to obtain an annual dividend of rupees 630. तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं. फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर is rupees 100. Rate of dividend is 9%. Annual annual income या annual dividend एक ही बात होती है, that is rupees 630. And rate of return is 7.5%. This is the rate of return, this is the annual dividend, this is the dividend and these are the face value. अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे. इफ dividend is rupees 7.5, then investment जो है वो हम ले रहे हैं rupees 100, that is the face value. Then if dividend is rupees 9, then इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए. सो वील कैलकुलेट बाय यूनिटरी मैथड डिवाइडेड बाय 7.5. सो वील गेट दिस एज रुपीज़ 120. सो अब हम मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज़ रुपीज़ 120, जो कि मार्केट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है. तो अगर डिविडेंड 9 रुपीज़ का 120 है, सो इफ डिविडेंड इज रुपीज़ 630, देन इन्वेस्टमेंट should be equal to 120, that is the market price, multiplied by 630 divided by 9. So we'll get this here as rupees 8,400 as the answer. Next is question number 13. A man invests a sum of money in rupees 100 share paying 15% dividend quoted at 20% premium. If his annual dividend is rupees 540, calculate his total income and rate of return on his investment. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जॉट डाउन करना है गिवन. सो फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज़ 100. रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%. Market value of each is 100 plus 20% प्रीमियम में है, सो हम 20 इंक्रीमेंट कर देंगे फेस वैल्यू में. दिस विल बिकम रुपीज़ 120 एंड एनुअल डिविडेंड या फिर एनुअल इनकम इज गिवन रुपीज़ 540. सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमको कैलकुलेट करना है. सो इन्वेस्टमेंट is equal to
rupees 540 multiplied by 120 divided by 15. Rate of dividend is 15. This is going to become rupees 4320. Next is the rate of return. इसका भी फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ. So we'll write 540 multiplied by 100 divided by 4320. So this will be 25/2%, or we can write this as 12.5% as the answer. Next, question number 14. A lady holds 1800 shares of a company of rupees 100 par value. The company pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend. If she had bought these shares for 40% premium, what percentage return does she get on her investment? तो सबसे पहले हम इसका गिवन जॉट डाउन कर लेते हैं. पार वैल्यू का मतलब भी फेस वैल्यू होता है, ये मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ. सो फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹100. नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता है 1800 हैं. डिविडेंड, दैट इज़ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 15%. अब आपको कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विच इज़ 40% प्रीमियम. सो ₹100 का भी हम अगर 40% निकालेंगे, सो वील गेट इट एज ₹40. सो इट इज़ 140 मार्केट वैल्यू. अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल इन्वेस्टमेंट. सो टोटल इन्वेस्टमेंट will be equal to 1800, that is the number of shares multiplied by the market value, that is 140. So we'll get this ₹252,000. Next we need to find out the annual income. Annual income will be, जो भी आपने यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ 15, एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स फेस वैल्यू, दैट इज़ 100, डिवाइडेड बाय 100. सो वील गेट हियर ₹27,000. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न और परसेंटेज रिटर्न. That will be the total income, that is 27 divided by the investment 252,000 multiplied by 100. So we'll get here 75/7. So this can be written as 10.5/7%. Approximately 11% हम इसको आंसर में लिख सकते हैं. Next, question number 15. Men invest ₹1,344 in buying share of nominal value ₹24, selling at 12% premium. The dividend on the share is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys and dividend he received annually. तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं. इन्वेस्टमेंट इज ₹1,344. फेस वैल्यू ऑफ each share is ₹24, and rate of dividend is 15%. Next, the market value of each share is 12% premium में हमको दिया है, so it will be ₹24 multiplied by 100 plus 12 by 100. This will become 24 multiplied by 112 divided by 100. So it will be ₹26.88. So this is the market value. Next we need to find out the number of shares. So number of
shares will be investment divided by the market value. Investment is rupees 1344 divided by the market value 26.88. So we'll get here 50 number of shares. अब आपको कैलकुलेट करना है amount of dividend received. So dividend received will be, number of shares हैं 50, rate of dividend is 15, this is 15, multiplied by the face value, that is 24 divided by 100. So in all we'll get this as rupees 180. Hence this is the solution. Next, question number 16. Arun owns 560 shares of a company. The face value of each share is rupees 25. The company declares a dividend of 9%. Calculate dividend Arun would receive, rate of interest on his investment, considering that Arun bought these shares at the rate of rupees 30 per share in the market. तो सबसे पहले हमको गिवन लिखना होगा. नंबर ऑफ शेयर्स हमको गिवन है, that is 560. Face value of each share is rupees 25. Rate of dividend is 9%. So dividend received या फिर annual income is same thing. So total dividend will be number of share 560 multiplied by the face value, that is 25, rate of dividend is 9, and divided by 100. So on solving this we'll get this as rupees 1260. Next, the market value is rupees 30 per share. So यहाँ पर हम given लिख लेते हैं, market value of each share is rupees 30. So total investment will be equal to number of shares, that is 560, multiplied by the market value, that is 30. We'll get this as rupees 16800. अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न इज सेम थिंग. सो टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया है, टोटल इनकम भी हमने कैलकुलेट कर दिया है. सो टोटल इनकम इज 1260 divided by the total investment, that is 16800, multiplied by 100. So on this we'll get 15/2%, or we can write this as 7.5% as the answer. Next, question number 17, A part. By investing rupees 7,500 in a company paying 10% dividend and income of rupees 500 is received, what price is paid for each of 100 rupees shares? So यहाँ पर आपको investment given है, that is rupees 7,500. Rate of dividend given है, that is 10%, and income given है rupees 500, और इस पे face value is rupees 100 for each. So finally यहाँ पर आपको number of shares calculate करने हैं. Number of shares will be, जो भी income है, that is 500 divided by the rate of dividend, that is 10, multiplied by the face value, divided by 100. So on this we'll get as 50. Up market value of 50 shares, market value of 50 shares will be 7500. यह आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं
market value of each share, that is the total investment divided by the number of shares, that is 50, we'll get rupees 150. Next part of the question, a man buys rupees 100 shares of a company which pays 15% dividend. He buys the share at a price from the market that gives him 10% return in his investment. At what price did he buy each share? तो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं. Face value of each share is rupees 100. Rate of dividend is 15%. Rate of return is 10%. So ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है 15% ऑन 100 शेयर. सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इफ ₹10 इज इन investment for ₹100. So ₹15 is investment on 100 upon 10 multiplied by 15, that is ₹150. So therefore market value of each share is ₹150. And hence this is the solution. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. At last, don't forget to like and share my videos with your family and friends. Thank you for watching and please do subscribe my channel.